we will push our domestic telecom marketers out of the market. Like it will, if it introduces something like when Jio was introduced initially, it pushed many major players like Vodafone and Idea had to merge. Airtel lost many of its subscribers. So if a foreign company is making profits out of us, I think that will more be on the negative side rather than on the positive side. So I'm not in favor in general for providing the government allowance to start selling it. I think I agree to Aman because Elon Musk is known for his power, and when he is lobbying, which is lobbying in India is also illegal to begin with, but if he is lobbying with the government to empower himself, he will monopolize all the telecom industry in India. We already have Jio at such a great level, and I think Jio are starting, and it's not a new technology to begin with. Jio is working on it, and Reliance is also supporting and getting government funds for the same. If it is happening in India, it should be because and for the Indian government and Indian citizens, and if it is happening with an Indian industry, if it is not with the help of Elon Musk, if it's happening with Indian organization, the employment is also going to increase because another industry is increasing, and then we'll have more economic background with it because people will surely buy a new technology because India has craze for buying new technology and getting upgraded and having a status quo. I want to put a counterpoint for both of you. We live in a globalized world, and moreover, the point you were telling, in 1915 to 1980s, India used to have this stance that we will not allow foreign companies to come in India. It was counterintuitive, and due to competition, nowadays our Mahindra company and other companies are competing against and showing it in the world that we can do it. But if we get isolated, we do not know what are the technologies others are developing, and we are left behind. It has already happened, and we should not repeat this mistake. We live in a globalized world, and lobbying is not a bad thing. And every democracy and every politics is supported by lobbyist groups. And as we know, right now Modi is in power, and Modi is friend of Trump. There is no problem in Elon Musk lobbying, and we will have to do it. Up to some extent, even I agree with Arun. What we can do is we can, like we know that in tier 2 and tier 3 cities and the rural areas, there is a telecom network problem. And what we can do, we can opt that Elon Musk technology in our country, and then as Jio did, we can bring out our national some network, some kind of domestic network in our country, adapting their technology so that even we will adapt some of the technology from their company also. Like we can make it a mixture and make it cost effective in a way so that to run our business, like to expand our business. I would like to add a point here. I completely agree with them that we cannot allow a foreign company to disrupt our Indian markets at a complete level. But I would also like to add that we can, I think our country is smart enough to understand that we can have alternative paths to execute the project. So what we can do is we can execute it in a joint venture format, that we cannot allow complete autonomy to Neuralink, Starlink to enter our country and disrupt the platform. So what we can do is we can invite them for a joint venture to work with our company. I totally agree with that. Even I'll agree that we need to globalize ourselves. So it's not like we are isolating ourselves completely from them. It's just that we cannot allow them to monopolize the Indian market. It's not because the biggest telecom marketers in our country are employing millions of people, and the employment they are creating, a foreign company coming here will not be able to create that many employment, and all of its revenue will be going to a different country, boosting their economy and not ours. So although I think on the globalization front it is an okay thought to allow them to come to India, but still the government will have to have some sort of control over them in order to not to let them monopolize an entire sector. Your point is very good, but extending your term, that monopoly term, like let us remind ourselves that in past 8 to 10 years, only 2-3 big telecom companies have monopoly in India.
and rest of the all the telecommunication companies are either shut down or are in the big losses. So I think the term monopoly, I don't think that it could be the right word for not welcoming such telecommunication company from outside of in India. And I'm also adding to my first point of getting that company in tier 2 and tier 3 cities is the major major pitch major condition to them that they should focus more to the tier 2 and tier 3 cities by the government only, so that our tier 2 and tier 3 cities can be more developed. Yeah, I think the monopoly term is for not an Indian organization, but for an organization which is not Indian, which is international, who is Elon Musk, supporting and providing. Monopoly can only be not supported in India or any other country if the country is not, accessible enough to get their own work done by their own organization. So monopoly here is not a term for any Indian organization. It's a term used for Elon Musk's organization. So that way, monopoly for some other nation happening in India is going to affect. So if Jio or Reliance is monopolizing the telecom communication industry, that is fine, because then it is still an Indian brand. So that's how monopoly is, getting turned on. About Shubham's opinion on a joint venture, I think I totally agree with it. If it's about a satellite network, it can always, Elon Musk can always have a joint venture with ISRO and other telecom industries of India. So I think that's a great point. If I may interject from a different perspective, I think Elon Musk is the right hand of the American President Trump, and it can improve our relations with America, which is the superpower of the world. And our neighboring countries like Bangladesh and other countries who are facing internal conflicts are also looking at US to give sanctions to the people who are harming their integrity. So US is a powerful influence, and India would benefit by having a partner like US in a geopolitical point of view. Okay, good. So let's have more time for feedback, otherwise we'll be losing on that part. तो कुछ जेनरिक पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर कुछ इंडिविजुअल स्पेसिफिक ले लेंगे. जनरली आपने देखा होगा कि आर्ग्यूमेंट बनाने वक्त जो स्ट्रक्चरिंग है वो थोड़ी पैची थी, पार्ट्स में नहीं होती, मतलब छोटी छोटी सी. ऐसे नहीं लग रहा था कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सा आर्ग्यूमेंट बना के प्रेजेंट कर रहे हैं. शुरू वाले स्पीकर्स खास तौर पे थोड़े पैची वाला अप्रोच था. दूसरा, आपने देखा कि किसी ने भी डेटा नहीं कोट किया. तो आगे के लिए जब जीडीज की इतनी तैयारी कर लो कि किसी भी चीज पे थोड़ा बहुत डेटा होता है तो वो एक अलग चीज हाईलाइट करता है ना. एक आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में, कि जो बॉय गर्ल डिवाइड होता है ना, वो है जैसे पहले 5 स्पीकर सारे बॉयज थे, तो गर्ल केम ऑन द 6th नंबर. तो कहीं ना कहीं, और आपने देखा होगा कि आप पे धीरे धीरे हैवी होना स्टार्ट हो गया होगा कि यार सारे बोल लिए, मेरी तो बारी नहीं आई. और आप दोनों के पास जो पॉइंट्स कहने वाले थे, आपके पास भी इनके पास भी रिलेटिवली दूसरों से बेटर थे, ज्यादा थे, लेकिन टर्न लेने के मामले में आप पीछे थे. तो जब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो आप एज अ गर्ल टॉप 3 में कोई एक तो होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कुछ लोगों ने 2 बार भी बोल दिया था तब जाके पहली गर्ल ने बोला था. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि शी वॉज, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर इमोशनली बहुत हैवी हो गया होगा एक टाइम पे, यार मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही, मैं तो बोल ही नहीं पा रही. तो मतलब अभी तो ये डेमो है, सोचो जब रियल लाइफ सिनेरियो होता तो कितना आपके ऊपर प्रेशर आ जाता. तो इतना डीप ना चले जाओ कि वहां से निकल के आना मुश्किल हो जाए. देखो थोड़ी सी ना बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस भी समझना. आप
वंस यू गो इनटू जीडी, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, है ना, तो कई बार हम लैक ऑफ एनर्जी शो कर रहे होते हैं, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, समथिंग एज इफ कि हम ना बड़े ड्रेन्ड से हैं। तो कईयों के फेस पे ऐसा होता है कि यस आई एम वेरी मच एंथुजियास्टिक, कॉम्पिटेंट, एनर्जेटिक, और किसी की बॉडी लैंग्वेज में लगता है कि मैं थक गया और मैं मतलब इस तरह से। तो आप जब आके बैठो तो आपको इस चीज को थोड़ा वीडियो में रिकॉर्ड करो अपने आप को, कि आप ऐसे फेस एक्सप्रेशंस ना बनाओ या दो कि जिससे आप बहुत ज्यादा थके हुए लगो, ड्रेन्ड आउट ना लगो, ना, वो नहीं होना चाहिए। और 07 है ना आपका नंबर? यस। नहीं 606 आपका है ना? तो मतलब आप एक बार बोले, उसके बाद ना आप जैसे डिटैच ही हो गए ग्रुप से, एज इफ यू आर नॉट इवन देयर। ठीक है, तो ऐसे ना करो कि टिक बॉक्स वाली बात ना लगे कि उसके बाद बस आप ऐसे ही एक फ्रोज हो गए, जैसे फ्रेम में फ्रीज नहीं हो जाता कोई, कि एंगल भी नहीं चेंज हुआ फेस का उसके बाद। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से मोड में ना चले जाओ, ताकि ऐसे ना लगे कि ये चीज ऐसे हो रही है ना। और देखा कि आपने देखा होगा कि आप एक ही पॉइंट पे, मोनोपोली वाले पे ना गेम घूमनी स्टार्ट हो गई, सारे लोग उसी बात को लेके चल पड़े। सडनली जब ज्वाइंट वेंचर की बात आई पहली बार, तो काफी लेट आई, और जैसे ही ज्वाइंट वेंचर की बात आई सबको लगा कि हाँ यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ठीक है, फिर हम दूसरा ये भी कह सकते थे कि हमारा बीएसएनएल जो है वो खाली पड़ा है, और वो सरकारी कंपनी भी है। तो अगर बीएसएनएल को कहा जाए कि भाई तुम वर्कआउट करो, तो उससे क्या है कि सरकारी एलिमेंट भी आ जाएगा, मेजॉरिटी स्टेक आप उसको दे दो, इसको माइनॉरिटी से आप डीआरडीओ, इसरो का तो ये काम उस तरह से नहीं है, बट बीएसएनएल का तो श्योर शॉट काम है, और बीएसएनएल को कोई पिक्चर में लेके नहीं आया। किसी ने ना कॉस्ट वाली साइड पे भी वर्कआउट करके नहीं बोला कि टेलीफोनी की कॉस्ट पे क्या असर आएगा, और ओवरऑल इंडस्ट्री पे इसका किस तरह का इम्पैक्ट आएगा। किसी ने नेशनल सिक्योरिटी और डेटा के बारे में भी नहीं बोला। मेरा पॉइंट था कि मेरा अगेंस्ट में पॉइंट था कि मणिपुर के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स ने यूज किया था, मैंने नहीं सोचा कि मैं अगेंस्ट में कैसे बोल रहा हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, आपने रीजनेबली बोल दिया था। जैसे अगेंस्ट में मैं बोल सकता हूँ कि मैं फॉर्म में था, मैं अगेंस्ट में जा सकता हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट ना करो, बात नहीं, आप फॉर्म में ठीक चल रहे हो, अच्छा ठीक है, तो उसमें रहो। लेकिन होता क्या है कि आपको जो कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस बोलने की ज्यादा करनी है। यू अंडरस्टैंड कि अभी आपकी वॉइस में वो जो फ्लूडिटी है, फ्लो है, वो मिसिंग है। ऐसा नहीं होता कि ये फ्लो लाया नहीं जा सकता। थोड़ा तुम ये सोचो कि मैं रोज फोन लेके बैठ जाना, और मैंने एक टॉपिक के ऊपर रिकॉर्डिंग करके सुननी है, तो जब आप ऐसे करके सुनोगे, सेम गोज फॉर यू ऑल्सो, कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेके अपनी मोटर गरारियां जो अंदर की हैं, इनको रवा कर दो। अभी वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ना रुक रुक के चल रही है, आदत नहीं है ना इतनी अंग्रेजी बोलने की। तो कोई चक्कर नहीं, मैंने भी ऐसे किया था जब मैंने अपनी जीडी क्रैक की थी, तो तब हमारे पास और भी नहीं होते थे बोलने वाले, और ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थे, तो नीग्रो थे हमारे पास हमारे हॉस्टल में। तो मैं नीग्रो पकड़ लेना, उसको चाय दूध पिलाना, केले खिला देना, उसके साथ आधा घंटा बैठ के इंग्लिश बोलनी, और तो कोई इंग्लिश बोलने वाला भी नहीं होता था, वैसे मोबाइल फोन भी नहीं होते थे जिनमें हम रिकॉर्ड कर सके। तो इंग्लिश की कुछ लोगों में, मुझे 2 लोगों को लगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है, और कहीं ना कहीं जो है कोई भी आप में से लिख नहीं रहा था while others were speaking। अगर आप थोड़ा सा उस टाइम लिख के आपकी बॉडी लैंग्वेज हाईलाइट हो जाती, तो उस तरह से चीजें है ना। तो एक और भी है कि जो लोग रिपीट कर रहे थे, दूसरी बारी बोल रहे थे ना, वो पहली बात को ही रिपीट कर रहे थे। सो कोशिश करो कि जब आप नेक्स्ट टाइम बोलो,
तो उस टाइम पे नई बात कि आई वांट टू ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू दिस होल थिंग। आपके केस में एक अच्छी चीज है कि आपके पास एक पिच है, आपके पास भी पिच अच्छी है, आपकी वॉइस भी उस लेवल पे ठीक है, ठीक है, आपकी वॉइस भी ठीक है। आपको ये वर्कआउट करना है कि टू साउंड नेचुरल, क्योंकि आपने एक्सटेम्परे स्पीकिंग वाला काम कम किया है। जैसे होता है ना कि फ्री फ्लोइंग वाला, तो ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा गहन चिंतन करके बोलते हो, कम बोलते हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो बाय नेचर, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप डायनामिक्स में हमें थोड़ा सा फ्लो में और आना है, थोड़ी सी एनर्जी और नेचुरलपन लाना है। तो उस तरह की जो चीज है ना, तो ओवरऑल देखो आपके सबके अंदर जीडी क्लियर करने का पोटेंशियल है। एक ही चीज मिसिंग है, शायद आप रीडिंग या इंगेजिंग विद करंट अफेयर्स उतना सॉलिड नहीं कर रहे। दूसरा, ये जो हमारे करंट जनरेशन में जो लैंग्वेज में रस कम हो गया है, आप कम छोटे में निपटा देना चाहते हो बात। ठीक, आपने देखा होगा एक दूसरे से बोलते हुए भी ज्यादा लंबी सेंटेंस नहीं होते, सेंटेंस भी छोटे हो गए हैं और एब्रप्ट से हो गए हैं और थोड़ी सी मतलब उसमें कान रस नहीं है। नेचुरल टेंडेंसी की खत्म कर दें इसको तो जजमेंट होगा। हाँ, जीडी में। और ये भी नहीं कि वो लस्सी बनानी है कि बात ही खींची जानी है, बात एक ही है। मतलब बात के अंदर वैल्यू ऐड करते हुए थोड़ी सी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसे सेंटेंस में होते हैं ना, जैसे इन्होंने बहुत जल्दी एग्जांपल भी आ गए कि जी मेरा एक ट्रैकिंग बिजनेस है, तो अभी भाई टॉपिक बिल्ड हो जाए, है ना, आप उसको कंसेप्चुअली एक पोजीशन की तरह रखो एंड देन आफ्टर अ व्हाइल कम विद द कि ओ लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जांपल। वो सेकंड पॉइंट होता होगा रेदर देन बीइंग द फर्स्ट पॉइंट कि लेट मी टेल यू हाउ दिस इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स would get benefited by such a thing. We are facing huge problems like this. तो इस तरह से जब आप बोलते तो आप यही ना कहते कि मैं अपने बिजनेस में, आप एक लॉजिस्टिक्स ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की बात करते। सो टॉक अबाउट बिगर थिंग, नेशन, सिक्योरिटी, सीक्रेसी, डेटा, कॉस्टिंग, कंज्यूमर कॉस्ट। सर ने मेरे को बोला था कि टॉप से देखा करो, अपने आंखों से नहीं, अपने आंखों की बात तुम्हें छोटा बना देगी। पर उस पे बाद में आ जाओ। मतलब जब 3 बार बोलना है तो एक बार हाई ऑर्डर बोल दिया, एक बार मिडिल ऑर्डर बोल दिया और एक बार बिल्कुल अपने पे आके बोल दिया। लेकिन शुरू ना ऐसे करो मैं, है ना। सो मेरे को किसी के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, बट सबको अपनी अपनी तरह से पॉलिश करने की थोड़ी थोड़ी जरूरत है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन रीच आउट टू मी, आई एम हियर। गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. I hope everybody got a feedback and this was a good session. Yes. God bless. और बस एक थोड़ी सी पिच को, जैसे आपकी आवाज हस्की है ना, तो जब आवाज हस्की है तो फिर अंग्रेजी और अच्छी चाहिए। हस्की आवाज के साथ अंग्रेजी बुरी हुई तो डबल मार पड़ती है। किसी की आवाज नहीं घड़े जैसी, मेरी वैसी एक हस्की है, हस्की वाली आवाज है। मैं वही तो कह रहा हूं कि एकदम वो आपने जब आप चेयर पे आके बैठे ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे आप पे कोई तूफान टूट पड़ा है। तो एकदम आप तो उस नेगेटिव जोन में थे और टॉपिक आने के बाद तो आप बिल्कुल ही, हाँ, ऐसे घबराना नहीं है, ग्रुप डिस्कशन है, बात नहीं करते। Sir, I started late because I was not aware of this. नहीं वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो बस तभी ठीक है। मैंने पॉइंट्स उठा रही थी। हाँ, पर आप जब लिख रहे थे तो कितना कुछ लिख लिया था। सर मैंने लिखा इसलिए था क्योंकि मैं एलोन मस्क को
सोच नहीं नहीं, अब इससे उल्टा हो गया भी, इस गर्ल ने लिखा तो इतना कुछ है, ये बोल रही नहीं। मैंने एम्प्लॉयमेंट नहीं, आप देखो ना, आप अपनी कागज निकालो, देखो हम तो ऑब्जर्व कर रहे थे। यस यस। तो अगर कोई गर्ल देखने में इतने पॉइंट लिख रही है तो ऐसे नहीं फीलिंग आएगी कि उसको आता नहीं है। तो वो मुझे लगा कि यार लिखने वक्त तो शी वॉज अमंगस्ट राइटिंग द मोस्ट पॉइंट, मैं बोलने वक्त नंबर दैट्स ओके। ऑल द बेस्ट। मुझे एक एक्चुअली आई आल्सो ऐड वन मोर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें टेस्ला और बाकी कंपनीज की भी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यस, पर आई वाज नॉट एबल टू मेक अ स्पेस टू उसके लिए, क्योंकि आप एक ही पॉइंट पे बार बार आ रहे थे। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट, जैसे वर्ल्ड में होता है ना फर्स्ट डे मोनोपोली वाली में, हाँ बस वो वही घूम रहे वो बाहर नहीं, बस आपने उस एक चीज पे नहीं घूमना, बाहर निकलना है। सर जब पॉइंट रखते हैं और कोई काउंटर पॉइंट रख देता है ना, तो फिर जैसे मैंने एक पॉइंट रखा, तरुण ने उसको काउंटर रख के फिर नमन ने उसको वो किया कि नहीं वो ये मोनोपोली नहीं कह रहा है, तो फिर उस वजह से वो बात हुई। नहीं मैं समझ रहा हूँ ना, पर आप इस पूरे ग्रुप को इसमें से बाहर निकालो। ओके फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड द मोनोपोली पार्ट अ लॉट, लेट्स डिस्कस अ न्यू पर्सपेक्टिव। चलो ओके, गॉड ब्लेस। और दिस इज टीम नेक्स्ट ग्रुप, यहाँ 3 ग्रुप्स आएंगे मेरा ख्याल है। नहीं कोई बात नहीं, यू आर डूइंग योर बेस्ट। कितनी जल्दी आ जाएगा सेकंड ग्रुप? नीम हो जाएगा, नीम हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर जल्दी बुला लो चाहे तो बेटर है, क्योंकि बस वो ऊपर इधर उधर घूम रहे हो। 12:30 आए थे क्लास में निकाल के कैसे आएगा? Please come. Please come. Please come. Please come. Come in, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Should we all sit on one side? No. One sir. जैसे भी आपको ठीक लगे। Should I sit?
लोगों ने और भी आना है? नहीं sir, that's it. That's it, na? We have one thing at a time. Okay, so you are complete, na? Yes. Yes, it is. So let me share the topic. For a long time, Tesla is trying to enter India for launching their EV. And a lot of discussion is going around because Tesla is seeking exceptionally excluding type of policies for itself. And the government is not able to grant that kind of exceptional approval for them. It wants to treat it like any other company. But Tesla wants to be treated slightly special. So that's why Tesla has not been able to come to India to manufacture cars and sell cars. So what is your view? Should India give them exclusive kind of rights and policy and allow them to come and set up things, or India should give every organization the same type of treatment and no exceptional rights to Tesla? So take 2 minutes to think and then we will discuss. Come in. Yes. We asked group they do have one. Not really. चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. I can do it, है ना? बैठिए, please quickly. हाँ, क्यों नहीं मेरे पास बैठे? Okay. So students, we have a very interesting topic. Tesla काफी देर से इंडियन गवर्नमेंट से कंसेशंस मांग रहा है कि मुझे कुछ एक्सक्लूसिव और एक्सेप्शनल परमिशंस और अलाउंसेस दिए जाएं to set up car manufacturing in India. Indian government has been not allowing that, which is delaying Tesla's entry as a car manufacturer in India. So should government give them some exclusive, exceptional treatment, or they should be treated the way any other automobile company is treated? What is your position and on this decision of the government? Take 1 minute to think and then we'll start speaking. So sorry to interrupt you, but we need to Wait. You can start the discussion now. Sure. Okay, so back in early 1990s, when India as an economy made a great transition, the LPG policy was introduced by Manmohan Singh, which was very similar to which was a globalization policy in general. We opened our barriers to newer companies, and we shifted from a more governmentalized approach to a more privatized approach. And how this is related to Tesla is because right now in India, we Indian brands do not possess the technology, the know-how and the resources to be able to manufacture and technologically approve and support an EV. In my opinion,
opinion, Indian government should give a certain leverage to Tesla for them to be able to come to India, so that we as Indians are able to see and learn from the technology as we did back in the 1990s and grow like we have all this while. And I would like to positively interject my colleague's point. I certainly believe that she made a lot of great points. However, on an opposing view, I think India's automobile industry is essentially strong. During pre-COVID, there were a certain number of companies such as Ford, such as Chevrolet, which had exited India. But due to the growing strength of India, a number of companies are coming back. So if we give an exceptional tax exemption or manufacturing exemptions to Tesla, we run a risk of demotivating our domestic manufacturers who have made great strides in manufacturing, such as the likes of Tata and Mahindra. So, I agree with my peer, but there are certain points which I would like to mention. So Tesla is a very huge company. They are one of the largest car manufacturers and the seller. So and EV is a very new industry in India. There are no pioneers of EV industry in India. So if Tesla comes, it will definitely bring a huge advantage to India, as it will bring EV technology to India, which is very alien for us right now, as we do not have any kind of infrastructure and we do not have right kind of technology for that to implement at ground level. So I think it's very it will be very beneficial for India if we do that. But I think when we talk about globalization, when any of the companies from foreign they want to enter into a market, obviously they'll see how it's a targeted market, but I think they also see other factors. For example, the economical factors, the customer demand, the government, and other reasons as well. So I think if we allow Tesla to come into our market, it will create a monopoly and it will overpower their decision over our government, and I feel Indian market will get affected by it, and it will create a chaos in the market, demotivating our domestic producers, and it will not lead to that growth which we require right now, as like we are focusing on made in India and self-reliance. So I think that is one thing. And as my friend mentioned that we are very alien to such kind of things, I think we are growing in that field and we are working towards that, taking some steps by producing our own domestic things. Okay, I want to say something in extra point. He said that Tesla was a big company and a big manufacturing company. So government should take permission to manufacturing this company in India, because it helps to grow our economy and development of our countries, and it's what I feel. If Tesla manufacture in India, it helps to foreign exchange when we are reduced to import some parts from other countries. I think my colleague has made an excellent point about how it can increase our manufacturing base. We also need to realize that Tesla can be an anchor industry. Whereas India is a strong ICE manufacturing nation, increasing into EV shall also bring in other ancillary industries, such as we might become rare earth minerals processing nation, which we see that China has taken a great control of. So the entry of Tesla would also allow us to compete with China in the future fields such as EV, such as rare earth metals, because a lot of industries which supply to Tesla would like to set up base near to their new manufacturing plants. I would like to say that Tesla, we know Tesla is a great company, but it's not like we should give some extra. Like it should be some extra, but not so much extra that incentives we can allow. But like government can do something like for India. Like in India also many companies are there. They can also perform better if we are given them some leverage, like some allowances, subsidies, or we can arrange some programs so that they can do an exchange in the other countries. They can visit some countries, some companies. They can
They can also do better, not like Tesla only will come in the India, then only our country will develop. It's not a big deal. A small point I would like to make. Another very big advantage that Tesla coming to India will bring in is employment. India struggles with a lot of employment issues, especially for an economy that transitions directly from primary to tertiary. This manufacturing sector would bring in that much needed employment and solve not just problems in urban India and bigger problems like climate, but also help in addressing issues on a much local level and at a household level. Even I would like to add to Nimit's point, like she said, it would provide employment. We can, like the government or it can let Tesla enter India, given our resources are utilized to the full potential, and it would be even beneficial for the Indian companies who are creating the same level of EVs, or it would help in the competition also, and it would improve the Indian companies also to learn and learn from their technique of manufacturing. While I agree with all of my colleagues' points, they're very well made about the economic impact, about the social impact. One nuanced point I would like to make is the political impact. India as a democracy has been very strong, and we pride ourselves on the fact that we have not been prone to foreign interference in our elections. The promoter of Tesla, the founder of Tesla, Elon Musk, in these times has become increasingly political, giving him special exemptions that we do not provide to other countries. Even other foreign companies can send a signal that we do play into the hands of Elon Musk. A special exemption to Tesla can also, with added pressure of his new best friend, the President of the United States, Donald Trump, can transition into us having to give special exemptions for Starlink, which I believe hold special, very negative ramifications for our national security. Yeah, I would like to add on. Like my friend Bhavna mentioned about the policies, I think we should not allow them with some exclusive rights, because in future there will be any other company which will try to enter and will give us that, oh, I want to add this point and overpower their dominance in our market. And like he said, now if at this point of time India is a country where other countries are trying to woo it because of the war and everything else, and we are kind of in neutral relation with every other country. So I think we are at the par right now, and we should not let someone dominate our jurisdiction and go beyond our domestic areas. I would also like to add on one point of view. Like my friend has shown the political point of view, I would also like to highlight the economical point of view. So as my peer Vani has mentioned that if Elon Musk comes to India, this will bring a monopoly. But I would like to point out that if Elon Musk comes and the manufacturing is in-house in India, so it's a very huge technology, and as there is a very ground level development of MSME sectors in India, which will enhance the ground level manufacturing of very small entrepreneurs, which will further encourage entrepreneurship in our country. It will also encourage other startups, American companies to come in association with India, which will further boost our economy. Also, Elon Musk is a very huge brand. He is also in several ventures, except from Tesla. So it will also encourage him to bring those sectors in our country. I would like to add on to Zoravar's first point, which is political value. There was a comment on Elon's post over Twitter from an Indian guy, who was there, that why Tesla was not able to enter the Indian market till now. And Elon Musk responded to that there are political barriers due to which Tesla has not the Indian market. And apart from it, on the economic side, India is potentially moving towards the EV vehicles, while Tesla is an EV automobile. We need to enhance our EV capacity first, then we need to allow Tesla to enter the Indian market. We need to have more EV charging stations at the place. Nowadays we can only see EV stations in tier 1 cities only. If you go to tier 2 and tier 3 cities, there are no EV charging stations. And first we need to have EV charging stations like the petrol pumps we have everywhere, and the companies
petrol companies like HP, Bharat Petroleum, they should have. But my point is exact. I also like to add on this thing. Like if Tesla comes, it will encourage more manufacturers in India to bring up those charging stations. If there is no technology at the front end, then how it will encourage the manufacturer at back end to bring that technology? I think both my colleagues have made a very important point that we can colloquially term as a chicken and egg problem. Should we bring in EV manufacturers first, or should we build the electric charging infrastructure first? So I think we should take a leaf out of China's book, where they brought in Tesla as an additional manufacturer, but also encourage their domestic startups to such an extent that today BYD, a Chinese homegrown company, is providing competition to Tesla across the world and has even started to eat into Tesla's market share in their home country of the United States. And it also enhances skills in individuals that are working in our India who have no knowledge about technology properly. And if India want to grow our economy, then he has to invest in this area for skill development before thinking about this investment or allowing Tesla company into India. I would like to say that, like my friend mentioned, the great like for employment, and it's I think good opportunity for the people who are unemployed, as our illiteracy rate is so high in India. So it will create many job opportunities and definitely it will make an impact on our economy. Also, I would like to add one more point. Like my friends or Rao mentioned that BYD, like you should take example from China of BYD, but you should also consider like China is a very advanced country in terms of technology. It's a $20 billion economy versus a $4 billion economy. Also, we have seen that Tesla sales have dropped from 1%, and Elon Musk is worried about that as well. BYD is a major competitor, I agree, but we're not in a stage currently that we can be that kind of superpower that we can develop our own EV company or something like that. But that doesn't give us doesn't allow us to give them some exclusive rights to. So sometimes we have to compromise. Okay, friends. I think we had deliberated a lot, so okay, time is over. Yes. So shall I give a feedback? Okay, friends. You all made some interesting points. So now is the time for a feedback. कोई कागज वहाँ है तो नहीं क्या? One. I just wanted to change the angle. Yes. That's why I hope I look good from this side. Okay, better. Okay. So now going with some generic points first, and then coming to individual. आपने देखा होगा कि seating matters. Yes. You came and you did not try to come in the front, and you sat towards the back, and that because you tried to sit at the back, you always remained a back seater in the whole discussion. So first and foremost is which position you can sit if you have the choice. So don't go too far behind. Because एक तो आप ऑब्जर्वेशन दूर चले गए, दूसरा मेंटली भी आप पीछे चले जाते हैं. आपने देखा होगा सीटिंग में ही आपको गड़बड़ कर दिया. ठीक है? So this is one thing which I am trying to give a general thing. Second is to look at each other. So there will be a panel which will be evaluated. Don't look at the panel much. Look towards each other so that you feel like this is the group, not they are the part of it. That's why we came here, right? Because you are addressing to sir. Group discussion is not addressing to the panel. They don't exist, right? In a way, right? You have to make point to your fellow members. And if somebody is speaking and you are not able to, see, so either you listen very carefully so that the observer sees that you are listening, or you bend it down to look at like this, right? It's perfectly okay. To making an effort to even you get a little bit glimpse of that person that, okay, I am able to see. Yes. So you try to make, sitting arrangements such that you can see each and everyone. But when anybody is speaking, even if you are understanding or not, doesn't matter. You must look into the eyes of the person. What we say, we listen with our eyes.
You listen with our eyes. With a smiling face, and don't forget to nod when somebody is saying. Right? Camera is observing you. Same as the observers, they have so many sharp cameras, high resolution. Every instinct of yours, they are observing. आपको उसका पॉइंट अच्छा नहीं लगा ना, आपका फेस बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा. So you need not say that you don't disagree with that person. So that level people will be able to observe. So when somebody is speaking, I'm sorry, right? 90% of the time it is listening. If you are 10 of you, 10% of the time only you get a chance to speak. 90% of the time you get a chance to focus on. I may be repeating which already being said. Yes. Yeah. So the third is to add data. So for such a topic, if you see, we were making some generic remarks and comments, but some part of data was missing. So try to read about such things so that at least one or two data points you can quote. And this generation that you have lived sometimes speaks a bit patchy. Patchy means कि कम बोलो और पूरा सेंटेंस ना हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो पूरी फ्रेमिंग नहीं होती, मतलब पैची सा होता है. तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को वो बनाओ आप. तो ये तो जनरल कमेंट्स थे. नाउ आई गिव इंडिविजुअल फीडबैक टू एवरीबडी वन. सो नंबर 13 आई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. तो इन्होंने एक चीज अच्छी की कि वन शी वाज अबाउट टू स्पीक, तो वो भी बोल रहे थे. शी गेव अ चांस टू हिम टू स्पीक, बट शी वाज आल्सो कॉन्शियस कि जो सेकंड चांस था उसको मिस नहीं किया फिर इन्होंने, बिकॉज देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी यू कुड हैव मिस्ड आल्सो, बिकॉज बाय द टाइम यू वर अबाउट टू स्पीक समबडी एल्स वाज आल्सो अबाउट टू स्पीक. सो शी वाज स्मार्ट इनफ कि मैंने पहले मॉडेस्टी दिखा दी, इतनी काफी होती है, अब नाउ आई कांट बी डोरमैट कि कोई भी आए और उसको ले जाए. सो दैट्स अ गुड थिंग दैट यू so I'm just giving one or two feedbacks saying that you took an initiative. That's a good thing because you started the discussion. Only thing you have to be conscious is कि at start you are a bit slow. जब आप second time बोले तो आपकी पेस ज्यादा फास्ट थी. पहली बार ऐसे लग रहा था स्टार्टिंग ट्रबल जैसे होती है ना शुरू में वाली. तो once you do 2-3 practice, तो पहली बार में ही वो फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा. पहले वो रुक रुक के से बोला जा रहा था, तो वो दूर हो सकता है. सेकंड, आपके केस में और उनके केस में ऋषभ, एक थोड़ी सी ना नेगेटिविटी झलकी. आपने कहा कि एज इफ इंडिया की ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं. इंडिया की इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत वीक है और हमें तो टेस्ला की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो आएगा तभी टेक्नोलॉजी आएगी. तो आपने मुझे शो कर दिया कि इंडिया शायद काफी ज्यादा वीक है. इतना वीक ना शो करो इंडिया को. जब भी आप पॉइंट बनाओ तो उस तरह से थोड़ा सा वो हो जाएगा. यू नीड टू कंचन प्रैक्टिस ऑन कम्युनिकेशन अ लॉट. रोज आपको कम से कम 3 घंटे बोल बोल के अपने फोन में अपने आप को रिकॉर्ड करना. 3 घंटे. और ये 3 घंटे होंगे, 20 मिनट बोले, ब्रेक लिया, चाहे आधे घंटे का, फिर 20 मिनट बोले, फिर ब्रेक लिया, फिर 20 मिनट बोले, ऐसे 20-20 मिनट करके बोलते ही जाओ. और जब भी बोलो फोन में रिकॉर्ड करो और फिर सुनो उसको ब्रेक के टाइम कि इज देयर एनी इंप्रूवमेंट, इज देयर एनी इंप्रूवमेंट. ये बोलना ही बस है. आपको अपना जो डायलेक्ट है ना उसको न्यूट्रलाइज करना है. जैसे यू कम फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? आई एम फ्रॉम पंजाब. हाँ, तो ये जो एक आप रूरल एरिया या मतलब स्मॉल टाउन से आए होंगे जहां पे मतलब इंग्लिश स्कूल में बोलना उतना कल्चर नहीं होगा. तो अब इसमें रवानगी लानी है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो आप. तो ये आपके लिए ठीक हो जाएगा. आप जो है थोड़ा सा ना जलेबी सी बनाते हैं, तो मतलब खाने में तो स्वाद होती है लेकिन वो बात में वजन कम होता है. तो आप अपनी बात में थोड़ा वजन भी डालिए. ऐसे सोच के तो बोल रहे हैं, फिर सोच के बोल रहे हैं, पर जो बात निकल के आ रही है उसमें सॉलिडिटी आप ऐड कर सकते हैं ना. अब आपके केस में तो मैंने दे दिया. आपको आपका कम्युनिकेशन ठीक है, द वे यू स्ट्रक्चर वो भी ठीक है, वॉइस की पिच भी ठीक है,
और द वे यू फ्रेम द आर्ग्यूमेंट वो भी ठीक है। आपको एक ही चीज से बचना है, ओवर डोमिनेट ग्रुप को नहीं करना। मतलब जब आपको लगे ना कि आई हैव डन इनफ, तो होल्ड बैक टूवर्ड्स द एंड टू कंक्लूड, है ना। अदरवाइज ऐसे हो जाएगा कि यू आर ईटिंग इनटू अदर्स शेयर टू मच, इतना नहीं करना। Any feedback about my communication? Communication is decent. It is above average or good, but can be slightly better. But communication is not an issue for you. That's for sure. Aditi, you have the potential, but you are not performing up to your potential. So practice 2-3 GTs and then you make good contact. Voice भी ठीक है, the way you speak वो भी ठीक है, लेकिन आप you came very late to the party. इतना लेट ना हो पार्टी में ना, so you were quite late. और and when you say आपने तारीफ तो कर दी कि you made a very good point, but उसके बाद नई बात नहीं बोली कोई। कॉम्प्लीमेंट जब दो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट के बाद आप अपनी तरफ से कुछ बहुत सॉलिड बात ना करें, ठीक है। तो आपने उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया और अपनी बात भी बड़ी सॉलिड की, वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया आपसे ना, न्यू पॉइंट वाज मिसिंग। आपको भावना अपनी आवाज में थोड़ी पावर, ग्रेविटास, पावर, तो इसको प्रैक्टिस से आ जाती है। ऐसे अभी थोड़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है, एक्चुअली है नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा है, बट वॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जब बोलते हो तो टुकड़ों में बोलते हो, पैची 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 पैची। इनको थोड़ा सा संजो के, माला की तरह पिरो के और थोड़े से पावरफुल लहजे में, फ्लो में बोलोगे। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, अगर इनको 3 घंटे बोलना है तो आपको 1 घंटा बोलना है। आपकी डोज इनसे 1/3 करती है। सर एक और भी पॉइंट पूछना था, इनको तीनों को पहले दे देते फिर आपके पास। यू हैव गुड पोटेंशियल इशिका, बट यू केम वेरी लेट इन द पार्टी, वेरी लेट, मतलब आप तो सुपर लेट ही थी। तो मतलब इतना लेट नहीं होगा आप जिंदगी में आगे से ना, तो ये है। और यू नीड टू वर्क अपॉन योर प्रेजेंस, है ना। एक तो ना बॉडी लैंग्वेज, जैसे सर ने भी कहा कि वंस यू विल कम, आप थोड़ा सा मतलब जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मेरे को ऐसे ग्रुप में पता नहीं बोलने से आप बुरा ना मानना। जैसे मान लो अगर इफ यू लुक एट हर हेयर्स, है ना, जैसे मान लो इसके बाल देखिए आप, तो ये ऑयली चाहे लगे लेकिन ये वेल पेस्टेड है। और जब ऑयली लुक वेल पेस्टेड होती है तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी बनती है। तो आप कई फिल्मों में देखेंगे कि माधुरी दीक्षित ने वो जो ऐसे बाल पूरे पेस्ट किए होते हैं, ब्लैक कट चमक रहे होते हैं ना, पर वो क्लैरिटी बड़ी आ रही होती है। आप थोड़ा बिखर गए, तो जैसे बिखर जाते हैं तो उससे इम्पैक्ट में थोड़ा सा लेस पावर आ जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज में ये चीजें छोटी छोटी मैटर करती हैं। हाउ यू आर देयर एट दैट मोमेंट, आर यू लुकिंग डाउन लो, वो नहीं करना। एंड नॉट स्पीकिंग इज ऑल्सो नॉट ए गुड थिंग, है ना, तो वो चीज है। सो एंड यू हैव अ स्वीट वॉइस। अब इसको थोड़ी सी एसर्टिव, थोड़ी पिच लाइट, स्वीटनेस को थोड़ा कम। ये स्वीट वॉइस जो है कई बार कॉर्पोरेट बोर्ड रूम सेटिंग्स में हमें उस तरह का एज नहीं देती, पिच एज दे देती। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, पिच बढ़ाओ, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, एसर्टिवनेस नहीं फील होती आपकी वॉइस में। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल पर्टिकुलर सी तरह की फीडबैक दे रहा हूँ। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट? यस, रेस्ट वी विल टेक बिकॉज़ वन ग्रुप इज I want to ask कि I was like speaking, but इन्होंने जैसे उसको कंप्लीट नहीं करना दिया। कोई बात नहीं, कोई नहीं करने देगा, कोई आपके प्रति इतना जनरस नहीं होगा। That's completely fine. But I was trying to speak in between two teeth. I tried, but I couldn't get. हाँ, बस अब आपने वही सीखना है, क्योंकि सर, वो आ जाएगा। वो कैसे करना? प्रैक्टिस ही आ गया। देखो, फाइटिंग, कोई बात नहीं, तुम भी बीच में जाके लड़ो थोड़ी सी, अपनी जगह बनाओ, ठीक है।
तो तुम इतनी सॉफ्ट ना रहो कि ग्रुप में तुम्हें जगह बनाने में प्रॉब्लम आए। तो थोड़ा सा हमें एसर्टिवनेस सीखो, जैसे अब कितना फ्लो में बोल रही हो, क्योंकि वो पहली बार बोल रहे थे तो चैलेंज आया, अब दूसरी बार बोल रहे हो तो बेटर हो गया ना, अब 5-7 और बार बोलोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। I hope you got some value from this. Yes. Quick, rush for your please go to the use of No. We have another 7:50 here, so you can ask later, right? Yes. तीसरे ग्रुप के साथ मैं वो फोन में उसमें टॉपिक नहीं बैठी, मैं तो जस्ट वांटेड टू मेक a message to the students. वही मैं generate individual goals वो चेक कर on various aspects. नहीं चाहिए ही नहीं। Water. बस। Please be seated. There was a news that Australia took a decision to ban the social media for school children. So now, this is the first time that such a overarching ban has been placed on access to social media for school kids. So now you have to discuss and put your perspective. What should other countries do, taking a cue from this decision of Australian government? Take 2 minutes to think and then we'll start speaking. You can start. Guys, if I'm making a permission to initiate this conversation, as we are aware that Australia has completely banned the social media under the age 16, we often read in newspaper, right, that in the early childhood, if we are exposed to continuous screen exposure, there can be a hamper in the growth. But when we say that it is to be implemented in other countries, let's see our nation, our value or norms are quite different from the Western countries, right? Still, our parents has a lot of control on our child. They can threaten and we can stop that. So I do not think that such extreme steps can be taken. We can go with our values, our culture, and maintain a neutral stance, and we can come something which are aligned with our culture. I do not think that we can go with such an extreme step, is what I think, considering our nation values and culture. So adding on to the Milan's point, I would like to add on that we should know the reason why the AI is
prohibited under the age of 16 in Australia. So there are many reasons. So nowadays I can see in our nation as well that people are getting distracted. So this is one of the reasons. We are not aware, means the children are not aware below 16 that how to utilize the technology. So this can be a reason. So if proper parenting will be there, it play a great role that to change people's mind rather than keeping this in a ban things. I completely agree with Amish. But my perspective is a little bit different. You might have noticed in the recent apps in social media, there is a feature for the children. It's a feature for the children to use their below the age of 16. Lot of content is hidden and lot of bans are there, and also the multinational companies or the creators of the social media are using AI algorithms in such a way to not promote false news and to promote social awareness. So I think with little bit of care, other countries can be. I think just a second, Himanshu. I'll give you the chance to respond. I believe that the thing that you are talking, that social media should add positive points, that they are hiding the content. I believe it still can be accessed. Reason being the generation that is coming now. It's very advanced, and even if we remember our days, we used to create a Facebook accounts saying that we are living in we had 8 years way back. I believe that it's a bold step, and bold step in the way that we should all also take this and should add a replacement to it. Like the parents can have the mental game introduced at home. So maybe these things. So I have 2 points to which I like अभी की discussion देख करके I have 2 points. First, I'm sharing my own experience. Like I have deleted Instagram last 6 months ago. I feel completely distracted. I don't think I'm like in that period. I felt that I'm not smart. I'm just a rat running for a race which is endless. Second, also my niece, she's a 3-year-old. She's wearing a specs. And countering Milan's point, we are not an open economy like USA. We are not that much close like China. We need to maintain that balance. And that balance, we need to have a solution for it. We can't ignore the fact that it is harming our next generations. It is harming our idea of the great India. Okay, so I want to ask something. As my friends Milind, Ayub, Himanshu and Shitakshi had made points like economy and bigger things. The topic is, we are discussing on why children should be stopped to use the social media. The first thing the children should learn is family bonding. In social media, we are against family, we cut off from family, we don't think of the family, what is going in the family, what father is thinking, what sister is thinking, elder is thinking, sibling is thinking. So, when you disconnect yourself from the social media, you get time for self-awareness, self-love, family bonding. You get to know what things are going on in your family. That matters a lot. Not what on social media. It doesn't matter if the next person is doing something. It doesn't matter in my life. Yeah, it matters when it comes to professional life. Professional life is for a person who is above 21 years or 22 years, 23 years. A children below 16 is not a professional. He is a children. Children means a family. He needs mental health and support at that time, because that is the time his cognitive skills are enhanced. And also, if you introduce that creative thing in the home, maybe the child doesn't have the, you can say, a fear in the outside world, because he is creative. He already has that physical thing in him. He has his mental thing improved. And speaking of being aware from social media, it can be compensated. Maybe we can launch a program which is of a duration of 6 to 8 months maybe, which is on digital marketing, which is needed at every step of your career. During college, Guys, during high school. let me make the point for adding to Sakshi's point. I will say most of the social media have this kind of filters for the child, but according to the census, it was around like 5% effective, as in
The reason being, most of the children are using their parents' phone or just using other IDs, going through the content. Most of the filters are inappropriate. Moreover, have you tasted artificially ripe apple? That is something what the social media is doing to children's mind. Most of the children are getting artificially matured, basically looking into the content which is not supposed to be of their age, not of their use. They are getting to be exposed to that kind of content. Most of these things are impacting the society badly. I completely agree the stance Australia has with the social media used for the children. Okay, so I agree with his point. Yeah, you continue. Thank you. Like, I agree with his point, like these restrictions can't stop children from refraining from social media, as more and more parents are now working. So they just use phone as an alternative for their children. They give their phones to their children so they can play, and they just give for them learning. But the children can change the apps, and the children are evolving. Like, they spend hours and hours on social media, and the parents are while working. So parents are using the phone as an excuse to keep the children busy. I would like to add something. The disadvantages of social media are there. We know the US is researching a lot about decreased attention span, and many cases are being filed for Meta, which is the huge social media networking site. And various questions are being asked. The decreased attention span, the kids are being disconnected from the physical world. The time where our generation and others, our parents' generation used to play and bond with each other, that thing is totally missing. Adding to Mohit's point, I would just like to add, this kind of interaction of children is basically adding to the pedophilic behavior we face in societies like US and Australia. Most of the dominant cases come from those places only. Those are the people using social media to look around for the children, the minors. That is the major thing, and that is a point of security and issue for parents as well. Okay, so covering our topic, I think that if we are not forgetting that Sir also told us to discuss about if the other government should decide upon the fact that if Australia has taken a decision about banning social media, then should this decision be taken by the other countries? So I would like to say that each country has their own well-being of children there, like the status in Australia may be different from the poor African countries, so they don't need to take this decision about banning social media because it will not impact that much. So if a country is to consider the banning of social media, they should consider the points in their own national consequences. Okay, so I completely agree with Parul because she is supplementing my point which I introduced, that I particularly want to say about the policy implementation of our country. If our country is thinking about implementing some policies, I think the social media sensitization program shall be looked upon, giving the roles and responsibility towards the teacher as well as parents, because those are the main framework which are aligned or rather involved with the child development, at least from when it comes to the role of teacher, that starts from the age 5 till 16. So I believe that if the teacher is sensitized or rather trained by our government with the free or paid program, that can create a good impact, and then we can shape the policy accordingly. But see, there's a problem in it. We don't have that much trained teachers for a generations. We have that size of a population. We don't have that much trained parents and trained teachers also. Okay, okay, so it was a good discussion. So we are here for a practice. So we have a time limitation. So I need to now give you some feedback based on what I could gather. So first I'll start with a few generic points, then I'll come to each one of you, how you performed them. So if you would have remembered that the moment discussion started, there was a 1 second pause
when there was a bit silence. And then after that 1 second pause, somebody started speaking. So it gave an impression that nobody is coming forward to take that chance. You understand? वो 1 second का gap भी matter करता है. There was a gap, है ना? एकदम चुप हो गए सारे. फिर ऐसे हुआ. फिर उसके बाद इसने उस टाइम पे कोई भी बोल सकता था, क्योंकि सबके पास अपॉर्चुनिटी, किसी ने ग्रैब भी नहीं की, ना. दूसरा जो चीज है कि while the group discussion is on, you should look at each other more and less towards the panel, or rather least toward the panel, because it is about you. Forget the panel and just be with each other in terms of looking at each other. So now let's go one by one. So you have good communication, but you came late to the party. You came very late to the party. तो इतना लेट नहीं होना. जो मैं पहले भी कहा था कि हमें कल्चरली गर्ल्स को थोड़ा मॉडेस्ट होना सिखाया जाता है, वो फेमिनिन मॉडेस्टी के चक्कर में हम पिछड़ जाते हैं ज्यादा. आपको जॉसल करके अपनी जगह बनानी है और दिखाना है कि मैं इस तरह से पीछे रहने वाली में से नहीं हूं. आई एम हियर टू मेक द थिंग्स. सो इन योर केस आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट आप बना रहे थे उसमें पंच मिसिंग था. मतलब ऐसे था कि जैसे गैस होती है, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वर सेइंग, बट वो कोहेरेंट होके एक इंपैक्टफुल आर्ग्यूमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा था. हाँ, स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा इशू था. कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है. For you, I think I will advocate 1 hour of practice of English speaking daily. 4 आप जोन्स में 15-15 मिनट मोबाइल फोन पे अंग्रेजी बोल के रिकॉर्ड करके कुछ सुनो. सुबह 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट, शाम में 15 मिनट, रात में 15 मिनट. जब भी बोलो, कोई इंग्लिश मैगजीन ले लो, कोई न्यूज़पेपर ले लो, कुछ ले लो, उसको लाउडली पढ़ो, रिकॉर्ड करो, खुद सुनो. इसके बिना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. फॉर यू, लाइक यू मेक गुड पॉइंट्स, लाइक यू टॉक्ड अबाउट अटेंशन स्पैन, and that was a point nobody was talking about. So you added a new point to the discussion that made a good impact. But आपको communication practice की थोड़ी जरूरत है. अगर इनका डोज 1 hour per day है, तुम्हारा डोज half an hour per day है, तो इससे आधा डोज दिया है. 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस करो ना. सो आपके केस में भी योर कम्युनिकेशन इज गुड, अप्रोच इज ऑल्सो फाइन, बट कंटेंट में ना कमी रह गई ना. वो ऐसे लगा गोल गोल घूम रहा है. बोल तो अच्छी बात, अच्छी तरह से रहे हो, लेकिन वो जो बात बोल रहे हो उसमें थोड़ी जान कम थी. दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज इट वाज ओके. Now coming to you, like for example, एक जब आप लिख नहीं रहे थे शुरू में, तो आपको खुद भी थोड़ा सा ऑड लग रहा था, नहीं? Kind of odd हो जाता है ना. नहीं, it doesn't matter what you are used to. What matters is what perception it is on others. सिंपल बात है. मैं क्या हूँ, ये तो इसका कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू सिर्फ इस बात का है कि जो वहाँ पैनल बैठा है वो क्या सोचता है. तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा मतलब इस तरह से रखो कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कर लेता हूं. सो अगर आप बैठे हो कागज में थोड़ा सा, वो उतनी देर में आप बिल्कुल खाली थे, और वो खालीपन सा आपको भी अखरता रहेगा कि आप ऐसे बैठे हो. तो मतलब अगर उसी टाइम आपने बस ऐसे थोड़ा सा ड्रामा भी करना होता है, कई बार हल्का सा नहीं भी करना, ऐसे ड्रामा सा कर दिया, ठीक है, लेकिन वो चीज है. दूसरा जो है, जैसे अगर आप कहते हो ना अकॉर्डिंग टू सेंसस, वो गलती हो गई. क्योंकि होता क्या कि सेंसस में ये चीजें नहीं मेजर करते. वो सर्वे बोलते तो अलग बात थी. सेंसस तो पॉपुलेशन का होता है, इन चीजों का नहीं होता, सोशल मीडिया का यूज वगैरह को लेके. तो एकदम सडन लगता है कि यू आर जस्ट सेइंग थिंग्स रैंडमली. तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा बचना है ना. सो इट वाज गुड यू टेक एन इनिशिएटिव. You talked about screen time. That also is a good thing as a new point कि screen time ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा flow कम है.
तो आपकी डोज पर डे 15 मिनट है. सो प्रैक्टिस फॉर 15 मिनट्स, यू प्रैक्टिस फॉर 30 मिनट्स, यू प्रैक्टिस फॉर 1 आवर. तो एक ना आपने वर्ड यूज किया कैन नॉट. कैन नॉट वर्ड ना करो, मतलब अवॉइड कर लो. शुड नॉट, मे, माइट थोड़े से ज्यादा बेटर है. कैन नॉट मीन्स ये आप में करने की कोई काबिलियत ही नहीं है. कैन इज अबाउट एबिलिटी. तो यू डोंट यूज द वर्ड कैन नॉट, जहां जहां अवॉइड हो सके. सो फॉर यू द पिच इज गुड, यू स्पीक एट अ गुड पिच, एंड यू एडेड अ पॉइंट अबाउट एआई. बीएआई का इंटीग्रेशन का पॉइंट अच्छे से बोला, लेकिन योर क्वांटम ऑफ पार्टिसिपेशन वाज लेस. क्वांटम बढ़ाना था. एक बार बोले हो आप, 2 बार करके कुछ कर सकते थे. हाँ वो तो किया, उन्हें ऐसी कमी कोई नहीं है. एक बार और बोल देते. एक बार कम था आपके पोटेंशियल के हिसाब से. और यू मेक गुड पॉइंट्स, मतलब ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग है, गुड ग्रुप बिहेवियर भी है, और भी बाकी सारी चीजें ठीक है. बस थोड़ा सा आप पढ़ो, बिकॉज आप अपने कंटेंट पे ज्यादा अब फोकस करो. हाउ पे आपको इतना फोकस करने की अब जरूरत नहीं है. सो दैट ये सच लाइक टॉपिक्स पे आपके पास कंटेंट स्ट्रॉन्ग सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, यू ऑल डिड वेल. 80% पे सारे हो, बट रिमेंबर बाकी जो रिमेनिंग 20% है उसी से 80% इम्पैक्ट आएगा. आई टेक दिस क्वेश्चन. Sir, I had extra content which no one added, but I was having issue while making my entry. इसीलिए तो तुम्हें वो दिया है ना डोज आधे घंटे वाला. वो आधे घंटे का डोज जो है करोगे तो बस एंट्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. 2-3 तो ऐसे इम्पैक्टफुल पॉइंट्स थे मेरे पास. मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुम अपने पोटेंशियल से थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हो. उसका रीजन ये है कि प्रैक्टिस की जरूरत है. यस सर, आई वाज काइंड ऑफ फीलिंग कि मतलब ग्रुप डिस्कशन थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा था, कि हम लोग टॉपिक से बहुत दूर आ गए थे. बहुत दूर चले गए थे. वो कोई बात नहीं, 4-5 और प्रैक्टिस सेशन मार डालो. yes, अब ऑनलाइन ही इकट्ठे हो जाया करो. ऐसी गूगल मीट का लिंक फ्लोट किया कि चलो हु वुड लाइक टू कम, आगे चलो एक टॉपिक ये ले लेते हैं, चलो लेट्स डिस्कस. ऐसे प्रैक्टिस करके. सर मेरा ये पॉइंट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इसमें ये ऐड करना चाहता था कि आई वांट टू मेक एन एंट्री, कि मैं ये चीज बोलूँ कि लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, और वो एंट्री का मौका नहीं मिल रहा, वो विंडो नहीं मिल रहा था मुझे. सो हाउ टू क्रिएट दैट विंडो? नहीं देखो, ऐसे थोड़ा बहुत तो इंटरजेक्ट करना ही पड़ता है, मतलब कोई बात नहीं. ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड. कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है. कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम था. फ्रेम मतलब जैसे होता है ना कि जब आर्ग्यूमेंट दो तो लगे कि आर्ग्यूमेंट है, ऐसे ना लगे कि एक फ्लावरी सी बात है. जैसे होता है ना कि कोई बात बोल भी दी और उसमें मतलब एक कॉम्पैक्ट सा करके ना, कोई डेटा सा डाल के एक सेंटेंस के अंदर एक व्यू सा लगे, आर्ग्यूमेंट सा लगे. वो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे बोलने के कारण थोड़ी सी पेस भी तुम्हें हल्की सी शुरू में बढ़ाने की जरूरत है. पेस तुम्हारी थोड़ी सी स्लो है. सर मैंने कोई पॉलिसी वाली बात की थी, वो रूल्स वो अगर वैसे प्रोग्राम चला सकते हैं. आई न्यू कि ये काउंटर हो सकता है, जैसे हिमाचल ने काउंटर किया, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, बट ये सुनने में कैसा लगता है? इज इट लाइक नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता था सुनने में. क्योंकि रीजन क्या है कि ये कोई टीचर्स के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, ये प्रॉब्लम टीचर्स के थ्रू सॉल्व होने वाली है ही नहीं. वो मतलब क्या है, मैं टीचर्स तो मतलब 8 से 2 है, तब तो बच्चा वैसे ही स्कूल में फोन नहीं लेके आ रहा. वो तो यूज ही तब कर रहा है जब 2 बजे के बाद घर जाता है. तो वी वर फाइंडिंग सोल्यूशन एट अदर पॉइंट. वो मैंने जान के नहीं बोला कि ऐसे मतलब बारीक में जाके नहीं आपको वो करना, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बताया. ऑल द बेस्ट. हमारी नेक्स्ट ग्रुप इज वेटिंग. प्लीज सर, आई एम फॉर द इंट्रोड्यूस. टू सर प्लीज. You were late to the party. Sir, I वो ठीक है. Okay. Not great. सर एक चीज सर मेरा प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता. हाँ, क्रैम करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया. नहीं वो करो, लेकिन एक पॉइंट तो ले आओ. क्योंकि मैं क्रैम नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉलेज लेनी बंद कर दूंगा. सर नॉलेज ये है कि जैसे मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो मेरी लर्निंग है. अब वो ठीक है, पर एक आधा डेटा भी ऐड कर दो बस. ठीक है.
कोई एक डेटा पॉइंट, ठीक है? Sir, besides communication, okay? कम्युनिकेशन ओके, थोड़ा सा और पंच, थोड़ा सा, Should I speak loudly? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। सर मेरा एग्जांपल जो था यूएस में, वो उसको बैक करके अटेंशन स्पैन वाले को वो सही वो तो ठीक था, बट ओनली थिंग इज की क्योंकि कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो जस्टिफिकेशन भी आगे मेरे पॉइंट नहीं पॉइंट ठीक था, मैंने खुद ही बोल दिया पॉइंट वाज गुड। सर मतलब जीडीपीआई में क्वेश्चन वगैरह पूछना मतलब रेलेवेंट रहता है? हाँ पूछ सकते हो एक आधी बार। और जैसे मैं थोड़ा कर रहा था तो उसमें क्या आउटपुट कह सकते हो मतलब? ऐसे लगता था थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी था। ओके, बीइंग मोर एनर्जेटिक एंड बीइंग बस साउंडिंग मोर एनर्जेटिक। ओके, तो ऐसा होता है ना कि हाँ मैं बड़ा पार्टिसिपेटिव एनर्जेटिक। और थोड़ा सा बाल कूल से ना, तो मतलब हेयर कट सा ऐसा जैसे देखो इसके बाल क्रिस्प है ना, इसने शेव सी किया तो फेस में एक क्रिस्पनेस सी है। अब तुम्हारी दाढ़ी ना तो रखी हुई है ना काटी हुई है, बाल बिखरे से हैं, तो ये थोड़ा सा सेट कर लिया। ओके, तेल लगा लिया, मिल जाता है। इंटरव्यू की जीडी में तो देनी चाहिए। नहीं नहीं छोड़ और आप ना ये छुपाया ना करो, वो देखने में ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आगे जब जीडीज होंगी तो छुपाना नहीं है। सर वो एक्चुअली काट लिया, थोड़ा सा हो गया 34 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्रुप प्लीज बी सीटेड। बस ठीक है ना, मेरे को भी जाना है, आई विल बी लीविंग नाउ। मेरे को चित्कारा यूनिवर्सिटी में मेरा सेशन है आंत्रप्रोज के लिए, आई विल बी लीविंग नाउ। Sir, Sony sir was calling you upstairs in that dining hall area. उनको कहना कि मैं फोन पे उनसे बता देता हूँ कि मुझे टू रश ना हो, तो मैं निकलूं फिर तभी तक वहां टाइम पे पहुंचूंगा, ठीक है? आप उनको बता देना। जाके आई जस्ट रश। ओके, I hope you enjoyed. Yeah. Pleasure having this. ऊपर वाई वो बंद करना।